इग्नोरिंग, और रुपी की वीकनेस, और देखिए सबने आईटी को डाउनग्रेड किया है, HCL टेक, LTIM, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा आर ऑल हिटिंग न्यू 3-month हाइज। मेरी बातचीत हुई अपोलो हॉस्पिटल के व्हाट अबाउट द नंबर्स, average revenue per operational bed was up 12% at 57,750. In next quarter there will be EBITDA break even on the pharmacy business, and they are saying that next year robust business is there, they will be turned positive on pharmacy. Apollo Hospital is a must have, the type of reach it has, and just the type of revenue, 542 crore का EBITDA था, which is 24%. So I think this correction, Apollo Hospital is a must have. The pharmacy business has been one in which they have been investing in the last few quarters. This quarter the losses were the lowest, and next quarter they will break even on the EBITDA basis. So that is my top pick. और मेरी उनसे जो बातचीत हुई, they are very bullish on the expansion which they are doing, and in the other verticals which they are saying will all start to pay off very very richly. 6000 का भाव मुझे दिखता है इसका एक साल में. This is the large cap. दूसरा आपको बताऊं, मारुति, it will gain for every 50 every 10 basis yen depreciation against the dollar, Maruti gains 1.5%. So at 145, 3% margins have already been added, and I think Maruti is a no-brainer at this price, given that 35 लाख गाड़ियों के ऑर्डर है. तो 9,300 पे यू मस्ट एड मारुति. 11,500 का टारगेट है. मैं एक साल का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वी आर क्लोजर टू एंड ऑफ अगस्त मिडल, and now you keep your horizon for 6 months because the markets are going to be choppy for the time being. Thirdly will be my mid cap play, IRCTC. In the whole railway stocks and the re-rating, IRCTC have done nothing, despite it being the premier or the monopoly play with the EBITDA margin of 60%. मुझे लगता है IRCTC is headed to 800, but you have to be invested in this stock because this can be a really outperformer in the railway place. दूसरा अजय जी, द इंडेक्स इज इमटेरियल. रिलायंस एंड एचडीएफसी हैव सो मच ऑफ हाई वेटेज के 2 दिन ऊपर नीचे आपको पता नहीं लगेगा. तीसरी बात मेरी लिख के ले लीजिए, 18 तारीख से ये बाजार घूम जाएगा. उसके बाद आपको 20,000 सेकंड हाफ ऑफ नवंबर में, अगस्त में दिखेगा, और मिड कैप्स में बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस. जी के लिए इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती कि आज दोनों गोइंकास को डीबार कर दिया. जितनी जल्दी ये बैड बैगेज हटेगा, सोनी विल टेक ओवर. इसका भाव 400 रुपए आपको अगले साल जरूर दिख जाएगा.